So different are the colors of life, and so different the opinions and sentiments which the contrariety of appearance naturally produce, that the conversation of the old and young ends generally with contempt or pity on either side. Sir. Hello sir. A question फटाफट से change करना. Hello. Hello. I am from NIT Jalandhar, pursuing BTech in Instrumentation and Control Engineering. And you are from? I am from Lovely Professional University, Sahil Gupta. And pursuing BTech CSE. And you sir? And I am also from Lovely Professional University, pursuing BTech. So our first question is, आपको पता है 14 Feb को क्या होता है? Valentine's. So my first question is, do you know what is special on 14 Feb? Yeah, it's the Lovers' Day, Yes. and as you all know, Valentine's Day. About 14th Feb. Definitely Valentine's Day. हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपको 14 Feb के बारे में पता है? Yeah, Valentine's Day. थोड़ा सा कैमरे के सामने. Valentine's Day. So अंकल हमारा पहला सवाल ये है कि 14 फरवरी को हम क्या मतलब सेलिब्रेट करते हैं? अरे कोई ऐसा स्पेशल? 14 फरवरी को हाँ जी. हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी. अरे फरवरी तो बीते 6 महीने हो गए, अब क्या याद रहेगा? तो ताजा बात करो. Yo sir. Myself Aditya, I am doing BTech from LP. So he is doing BTech from health. So आपको पता होगा, वैसे अपनी बॉडी तो काफी किया, आपको पता होगा कि 14 Feb को क्या होता है? Any idea about 14th Feb? Yes, that's Valentine's Day. आपको पता है 14 फरवरी को हमारे देश में स्पेशली क्या सेलिब्रेट होता है? 14 फरवरी. And what's today? Today. Today is I think 14th Feb actually. I knew. And anything special about 14th September? 14th of September. Yeah, I fought with my dad. Okay, that's So I came in a mall town to enjoy myself. Okay, but for your knowledge, I will try to tell you that today is Hindi Divas. Okay, thank you. That It's mentioned in newspaper today. yeah, it was there. No, I haven't read that actually. Sorry. Actually, it means for such type of events you have to read the newspaper. Yeah, definitely. Valentine's Day हमें याद है, उसके लिए न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं. नहीं वो हो जाता है ना. डिपेंड करता आप लोगों से देख के याद हो जाता है. ठीक है. Anything special which you can think of today? It's the Lovers' Day. No, that is on 14th September. Anything special which you think is today? It's a very bad day for me, I can't tell you. Then I tell you, today it is Hindi Divas. और आज क्या है? 14th सितंबर. तो आज क्या है? आज है हिंदी दिवस. देखिए आपको नहीं, आप इंडिया में रहते हैं, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, बट यू डोंट नो दैट हिंदी आज हिंदी दिवस है. स्पेशल आपके दिमाग में था? 14 सितंबर. 14 September? Yes. So Sunday or So it's the Hindi Divas. Hindi? Divas. Our national language is Hindi and today is Hindi Divas. आज 14 सितंबर है, तो आज कोई? हाँ, आज हिंदी दिवस है. हाँ जी. आज हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा का दिवस है. हाँ जी. इस हिंदी भाषा से हमारे देश को ये प्रेरणा मिलती है. हाँ जी. आज क्या है? 14 सितंबर. So do you know something about this day? Yes. So he knows it is हिंदी दिवस. And you know Hindi दिवस? आपको आपने पता है कि हिंदी दिवस थी, इसने कह दिया हिंदी दिवस. कोई न्यूज़पेपर से पढ़ा था. न्यूज़पेपर में पढ़ा था. अगर न्यूज़पेपर में आज सुबह ना आता तो आपको नहीं पता होता कि आज हिंदी दिवस है. So anything which you have done to celebrate this हिंदी दिवस? No. Do you read any novels of Munshi Premchand? Do you know who is Munshi Premchand is? Do you know who is Munshi Premchand? Yes, he is a writer of Hindi, but short stories, short or novels. Novel. Do you know what we say novel in Hindi? पूरे क्वेश्चन चेंज करें, हिंदी में Do you know? So they do not know what we say novel in Hindi, but they are celebrating Hindi Divas by coming in this PP and Prakash Bakery. So they are coming in Prakash Bakery and celebrating Hindi Divas. You are also celebrating Hindi Divas. And today
Today is 14th of September. 14th of September. And anything special about 14th September? I've just attended a Onam celebration, so I don't know anything to do with the young crowd. No, actually today is Hindi Divas. Oh yes, that also I know. Hindi Divas. I've already written a lecture. अच्छा दिन पता क्या है 14 सितंबर आज है हिंदी दिवस देखिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बट यू डोंट नो और सर 14th of September मतलब आज कुछ खास दिन। आज सोडल का मेला है, बाबा सोडल का दिन है। हाँ जी, लोग सोडल में होटल का मेला भी है। अरे गए थे सोडल के मेले, वहाँ पर खूब जलेबियाँ खाई, पकौड़े का मज़ा आ गया। और वहाँ पर वहाँ पर यूपी की औरतें आई तो डांस करती थी, 30 रुपये टिकट था, तो हमने देख लिया। What kind of novels you like to read? Novels. I'm not interested to read anything. Right, I just want to listen. Right. Okay. It's difficult to read. What sort of music? What sort of music? Music's like Jai Singh Brothers mostly. Okay. and what novels do you read Dale Carnegie कोई भी novel हो या फिर you Sherlock mean Holmes की Sherlock Holmes. You read English novels Yeah. you don't read anything about Munshi Premchand have you ever heard who is Munshi Premchand is and you sir have you ever He's a great writer. he was a great writer so in Hindi English Urdu Tamil Punjabi He mostly wrote in Hindi. Have you ever read any novels? I mean, you would like to read novels? And what sort of novels you like? I like to read more of non-fiction. And Not I mean, novels as such. Hindi or Any Hindi or I have read. I mean, during youth, what you said, I used to read. I was fond of Premchand. Okay, so you were to mention that even. what English novels do you read I have read Dan Brown's Angels and Demons and Three Mistakes of My Life. so do you know anything about Munshi Premchand Yeah, but I haven't. you haven't read anything so my second question is what type of novels do you like to read I don't like any novels. I really feel boring to read. And So I think you don't read Mills and Boon? You don't read anything about the works of Chetan Bhagat? आपका कोई मनपसंद मनोहर कहानी Ma'am, at what occasions do you like to visit holy places like temples or any place of worship like Gurdwaras? we go to all sorts of religious places. At what occasions? Nothing specific. On festivals, whatever are related, yes. Otherwise, Do you ever visit places of worship like temples, Gurdwaras? Definitely, sometimes. At what occasions? At some Jayantis like Guru Nanak Jayanti and Guru Nanak Jayanti. So it is not a daily ritual or something? Not at all. Not every means you go whenever there is some sort of social occasion or social gathering of that. Definitely. Not for mental peace, only for social gatherings. Mental peace, we already have a Guru seminar of home. You be really religious person, so how often do you visit holy places? Saturdays. Every Saturday. Every Saturday without any That's a ritual for you that you have to visit every anywhere in the world, anywhere in the कितने ऑफन विजिट करते हैं कोई भी होली प्लेस मंदिर या कोई भी और देखो ये हम महीने या हर हफ्ते वैसे हम तो जाति के ब्राह्मण हैं। हाँ जी हमारा धर्म है मंदिरों को जाना, पर मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं जाता। पता लग ही रहा था वैसे मैंने दुनिया का कोई भी तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ जी, अपना गंगोत्री, यमुनोत्री और ये क्या कहते हैं गंगा सागर। When do you like to go to holy places? Twice a year. And you? Once a year. Once a year. So they like to go to holy places once a year, twice a year. हर हफ्ते में कहाँ जाएंगे? घर का गुजारा नहीं चलता, कहाँ जाएंगे मंदिरों में? मंदिर तो पैसे मांगता है। Know who is the father of Kaurva? Do you know who is the father of Kaurva? Yes, he is right. He is. And who is the father of Kaurva? Simple, yaar, it was Pandu. Okay, what type of clothes do you like to wear? What is the formal attire do you like to wear? formal, casual wears, jeans, top, and suits as like. It depends on The occasion to occasion. occasion. तो आप किस तरह के कपड़े पहन लेते हैं? और आपने कभी धोती वगैरह मतलब डालते हो?
कभी कभी डाल ले। और आजकल के लड़के ऐसे मतलब से भी घूमे हैं हम भी, मतलब जीन्स आप इसको प्रेफर करते हैं? कभी नहीं डाली। लेकिन हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? अरे जैसे कि हम देख ही रहे हैं अभी कुर्ते पजामे में बैठे हुए हैं। हाँ, खुला आसमान हो, खुला खाओ, खुला पियो, नंगे नहाओ, नंगे पहनो, खुले कपड़े में मजा है ना। जितने तंग होंगे मन भी तंग होगा, तन भी तंग, विचार भी तंग, विचार भी तंग होगा। तो इसलिए कपड़ा हमेशा साफ सुथरा धुला होना चाहिए, जिससे आनंद आए, हमें भी आनंद आए, आपको भी आनंद आए, हमारी घरवाली को भी आनंद आए। What type of clothes do you like to wear? See, we are standing out of cotton. It is a casual. Yes. Do you like to wear casual? Yeah, everybody likes. Do you like to wear casual? So, have you ever worn a dhoti? No. Have you ever wear a dhoti? No. Worn a dhoti? No, I have never worn a dhoti. Then? Frankly, but since it is a survey, we have to keen to go everybody. have you ever worn a dhoti? Never. Never. No, you just tell me one thing. Like, No, sir, please. I have never worn a. so, but depending upon the scenario, we have to follow the crowd. And you can't wear a dhoti in lakhs of people, and you alone will be, in the limelight that he is wearing a dhoti. मतलब अपना मजाक उड़वाने वाली बात. What type of food will you order in a restaurant? Pizza and Manchurian, and I like burger. And खाना, कड़ी खा लो, चौल खा लो, साग खा लो, ये हमारी पंजाब की खाने की पदार्थ अच्छे हैं। साग है, सरसों का साग है, मक्के की रोटी, मजा नहीं आएगा। And what do you think your parents will order for you? If your parents are there with you, but they will order. they will order khana. They will not let you eat burger and pizza. No. और जो आजकल खाते हैं सब पिज्जा बर्गर ये सब। ये जाओ अंदर से जाओ, ये स्टोमच को खराब करता है। हाँ जी। इसलिए आप लस्सी, दूध, दही, अच्छा खाना खाओ, जिससे आपको पढ़ाई भी आएगी, नहीं तो आप स्कूल में डल हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ जी। सर आप अगर मतलब सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप किस तरह का खाना ऑर्डर करें? Typical Indian food. टिपिकल इंडियन फूड। And that too in a veg. मतलब आप जब किसी भी कहीं भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे पहले मतलब क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? मेरी मनपसंद जो सब्जी है कि पालक पनीर है। पालक पनीर। हमारे बच्चों को मतलब किस तरह का खाना चाहते हैं कि वो खाएं? वैसे तो मैं चाहता हूँ घर का बना हुआ खाना खाए, बिहार में तो कुछ है नहीं। They are not vegetarians out of compulsion. Our kids are not vegetarian out because the family is vegetarian. See, anything, whether it is fast food, whether it is traditional food, fast food, any food. We have all. They know that they have to balance in case once a week we have fast food. They know that extra amount of salad and everything going so that we So everything nutritious. Everything goes to bill. South Indian, North Indian, Chinese, Italian, anything they like. Our house is open to everything, anyone can think of any right thing and do. Like my in-laws don't even take onion. We are not Jains. They don't take onion or garlic or anything, but we consume. Yeah, it's the Lovers' Day. Valentine's Day. Oh yes, that also I know. Hindi Divas. I've already written a lecture. कोई हाँ, आज हिंदी भी पता है। Pizza. आज छोटू का मेला है, बाबा छोटू का मेला है। Manchurian, and I like burger. ऐसा अपनी बॉडी को क्या? महामूर्ख है जो कहते हैं इंग्लिश में, क्यों बोले? नोर कहानियाँ। नूर कहानी। पर यूपी की औरतें आई तो डांस करती थी।